Okay, good evening, everyone, once again. So let's begin our session on current affairs. So this is the first session. So we will kind of set the tone as to how we will proceed, what all is expected out of you, because this is a vast subject, and I don't know how many of you are regularly into reading some form of newspaper or following whatever is happening in India and around the world. So let me begin by asking how many of you are currently following whatever is happening, or you've been doing so for maybe on a regular basis, or maybe you've just started. So how many of you are hands-on with, let's say, whatever is happening? Maybe uh, some bits of news or some bits of information you have on whatever are the key things which are happening. Good. So Lavanya is one person. Hitesh is another one. Very good. Excellent. Sandhya also. Fine. Fantastic. Rest of you need to, I think, buckle up. Rest of you need to start if you've not started already. Uh, now, what is so? Let me first ask. Okay, Lavanya or Hitesh or Sandhya can tell me what all they do to keep abreast of whatever is happening. What kind of things you read? Anyone can answer. Hello, sir. Am I audible? Yes, yes, very much. Yeah, so sir, the thing that I do is read newspaper. The one that I receive is Times of India. I Mm, start with editorial and then mm, move to Times Business. right. All right. So like Mm, because of exams and all, this is something that I am able to follow, but I just need more input that should I increase this to other newspapers as well, or mm. is this sufficient? Okay, very good. Excellent. So, see, one is what all should we be aware of? Okay, because in any case there are umpteen number of newspapers available to us. So one is and more or less if you see uh, 50 I mean rather not 50 but 60 70 80% whatever they say will be the same, right? They will maybe now every newspaper has got a let's say they have got an inclination, right? There are some newspapers who are pro regime or pro establishment, right? They will I mean what people call Godi media, or they will sing the tune of whatever the ruling dispensation says, whereas there is the other side. There are newspapers or publications who take a contrary view and who are more eager to highlight the flaws and maybe criticize some of the things that these people are doing. So if you look at on both the sides, so I would call the Indian Express, the Hindu, right? These are the newspapers which are, I mean, I would say they are not biased or against it. They are very objective in their analysis, and they call whatever is spade a spade. Whereas the other newspapers, they are kind of more is pro establishment. So, uh, but the idea here is that okay, we can get a flavor of all of those by maybe I share a compendium of articles called TTBR, which is topics to be read, which has got articles from all of these. Okay, so there are some articles on whatever is more relevant, right? Whatever you should know, because there are so many stories now, out of which there are some stories which are very short-lived. So you don't need to really be bothered about those. But there are some like which have got major implications. Like so, let's say if you've been following about Trump tariffs or these. So maybe on a geopolitical level, what are the various equations, right? So the different players like China or Russia or European Union or the US and India. So what are the equations, right? The how things are evolving, because geopolitics has now become a T20 rather than a test match or a one day, because every day something happens, right? So the point is that there are certain things which we should be keenly following, right? Whether it is business or it is politics or it is any other sphere, right? And then there are certain things which we may overlook. Fine. So I will kind of, I mean, people who join my course, so it will be my responsibility to kind of discuss. So today, let's say we discuss six events in detail, right? So then you need to follow up on that as those stories develop. There are certain things which, uh, okay, maybe they will not be on a recurring basis. Let's say recently, if you have heard that this
Maganrega, like there was a scheme of government to provide employment guarantee to the rural areas. That has been changed and now it is called some G Ram G, right? उसका भी एक पूरा expansion है. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, so that it just kind of sticks with you. Maybe there's no development that is going to happen on a day-to-day basis over there, but you should be aware, because one is that in many interviews, one favorite question of these interviewers is, um, please tell me some important news of the day. Now, some are more specific. They will say that tell me three global news or three news from India, or maybe three business news, right? Or news from finance sector. So in different flavors, this question gets asked. So which is why I'll be also sharing daily important news, right? Going forward, I share that wherein we got top headlines, say five headlines which are maybe non-business in nature, and then three, four which are business and finance in nature. So if you kind of just stick to those, follow those, or read about those, then you would be fairly well informed. Then, of course, we will be doing a lot of discussions, right? Group discussions will obviously be based upon some of these, these events which are happening. So, extempore and group discussions. So, you will get a good flavor of all of those as we go along. So, again, how much time one should spend on reading? I don't think you should spend more than an hour. Okay, max an hour, जिसमें सब कुछ रीडिंग हो जानी चाहिए आपकी. So it's not that, I mean, you're not supposed to kind of read each and every news article to great detail. You should be able to glean things out of there, right? You should be able to pick up important pointers out of there. You should be able to pick up important indicators out of there. And you as a manager, you would be required to hold those numbers, remember those numbers, because those numbers are very key. And not just know those numbers, but also the story behind those numbers. So if you just take a look at this chart that I created and shared, this is about key economic indicators. Now, I have not covered 100%, but at least to a great extent, like 80-90%, this covers things which should be there, the numbers which should be there on the top of your mind, right? And the stories behind those. So we will surely go through these in detail as we go along in our sessions. There are some which are static in nature. Now, see, if you talk about current affairs or general knowledge, if you talk about, there are two parts. One is a current affairs and one is a static GK. So, current affairs is something which keeps happening every day, right? Static GK is something which is like which you need to know. So, say for example, I ask you how many Lok Sabha seats are there in India, right? Uh, then I ask you, okay, out of that, how many seats does BJP have? How many seats does the opposition have? Uh, let's say, how many states are there in the country? How many UTs? Who are the chief ministers of these states? Who are the governors of some key states? Uh, so these are some things which you need to know. Static GK, how many Rajya Sabha seats are there? How many of them are nominated by the president? Right? How does a member of a Rajya Sabha get elected? All of these things are a part of the static GK, right? Uh, so those will be covered. So let's say a part of that is here. Let's say like Rajya Sabha seats, Lok Sabha seats, and all of that UT states. This is a part of that. And then we will have a CM, governor, and all that chart I'll give you. Uh, of course, there is much more that is needed to be known, which I will share with you as we go along. Then there are these indicators like GDP. So this is something which should be there at the top of your mind. Growth rate, right? Inflation, right? This keeps every month data comes out, so we change the figure here. Then we have the exports, imports, the current account deficit comes out of this. These all I'll explain in detail when we have these economics sessions. So our sessions will cover these areas also in detail. Uh, Services exports, merchandise exports, service imports, current account balance, net FDI, right? Inflows, foreign exchange reserves. Uh, then numbers pertaining to budget, right? What is the size of the total budget? What is the expenditure? What is the revenue? What are the various components of that, right? Then debt to GDP ratio, fiscal deficit. So all of these things. Then you have installed power capacity, internet penetration. Then you have these rates, right? These repo rates. Recently, RBI lowered the repo rate for the third time in succession. Reverse repo rate. So this was, I think, before that. Okay, this was before
the last rate cut. This I think I created on the 2nd of December, and 4th or sometime I think there was a rate cut once again. So these need to be updated. Then CRR, bank rate. What are all these? We will discuss in our session on economics. Capital adequacy, then exchange rate. It's gone further up 91. It has crossed gold price, and silver also is now. We need to include it. Crude oil, dollar index, right? Then the stock market indicators, right? We should know all these indices, right? I mean, what was ये भी थोड़ा पुराना हो गया. What was the close, right? BSE Sensex. There are three indices of the US markets which we track, DJIA and the Nasdaq and S&P. And then we have the manufacturing purchasing managers index. This is called PMI, which tells you how is the manufacturing activity. Services PMI, then global GDP, US GDP, China GDP, defense budget, GST, income tax collection, corporate. So all of these are numbers which uh, are not just numbers here, but they also tell a lot of stories. So we should be uh, quite conversant with all of these, right? Maybe we are from science background, maybe we are from engineering background, or maybe we are from a medical background. That's fine. But as when you step into the room to be interviewed, then you should be hands-on with all of these, because nobody will give you any uh, leeway for not knowing, some of the major ones here. Okay, so this is what we will attempt as we go along to become hands-on on all of this, right? Okay, so with this, let's move to the main story. So I've left this place blank because, of course, I'm going to cover 5, 6 stories today. Let me hear from you if you can share, as per you, some of the events that are unfolding. Maybe not today, maybe just in the recent past, but which are very important for all of us to keep track of. So tell me anything which you have read. See, feel free. The Indigo Bye. situation. Indigo situation. Very good. So, indigo situation. Okay. Indigo situation. Yes, Hitesh. So the massacre that happened in Australia against Jews. Yes. So, Australia, so mass shooting of, of, um, or in Australia, right? So this was an anti-Semitic act. वो anti-Semitism क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे हम. Yes, Kushagar was saying something, and then I'll come to Ashish. Sir, I had the same point. Mass shooting in Australia. Mass shooting in Australia. Okay, very good. Yes, Ashish. So the dollar recently touching the 90 rupee mark. Yes, dollar recently touching 91, right? So dollar is now 91 plus. Okay. Yes, Siddharth says SIR, sir, right? Sir is special. What is the full form of sir? Anyone? Special intensive revision, right? So electoral rolls, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम. Special intensive revision. So this we are going to cover today in detail. This we are going to cover today. What else? Brown University shooting. हाँ, ब्राउन यूनिवर्सिटी थी रोड आइलैंड में. वहां पे थोड़े दिन पहले एक शूटिंग हुई थी. 2 लोग मारे गए थे, आई थिंक. रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी shooting. Univ shooting. Okay, fair enough. What else? Yes, Ariman. Sir, the multiple wars going on, US, Venezuela, Thailand, Cambodia, Russia, Ukraine. So many wars are happening, right? Yes, sir. Many wars are happening. So Russia, Ukraine goes on as usual, right? Then Thailand, Cambodia. Okay, so Thailand, Cambodia. US, Venezuela अभी हुआ नहीं है, but then there's always a threat, right? So US, Venezuela अभी हुआ नहीं है, but there's a threat. Yes, Janvi. Yes, Janvi. Sir, You are the Go ahead. Russia US
India ties that are happening, the division that's going on, and the attempts to form groups, sometimes anti-Europe, sometimes anti-US. So the geopolitical equation is what you mean, right? Yes, yes. Geopolitical equation. So the major players here are US, Russia, EU, China, and India, right? From the perspective of alignments, because alignments keep changing every now and then. Every time Trump says something, something happens, right? So yes, this is very important. Putin's India's visit, right? So Putin's India visit can also be clubbed under this. So Putin's India's visit, okay, fair enough. Mexico threatening tariff, yes, very good, excellent. China rule for AI regulation, yes, great, good. So I think quite a lot of things are unfolding, and let's put them in perspective. Let's try to club them together and try to start looking at different things. So let's take one by one. Okay, so I'm going to cover some stories in detail, and we can discuss the rest of them, which I have not kind of captured here in detail. So the first story that I'm going to cover is Maganrega, right, with G Ramji. So Maganrega was basically National Rural Employment Guarantee Assurance or something. Mahatma Gandhi, right? So what was it? Anyone? Are you aware what was Maganrega? This was started in 2005. Yes, Janvi. Or your hand was raised from the previous this thing. Acha. Yes, Kaushal. Yes, sir. Okay, no problem. Yes, sir. It was a scheme from the central government that guaranteed employment for the people involved in agricultural sector of up to 100 days a year, with central government putting around 75% of the cost for the same. Central government putting 75% or 100% earlier? I read 75%. I'm not sure about the number, but I think they have reduced it to 60-40. They've reduced to 60-40. Okay, fair enough. Yeah. Right. So that's see, basically, this was about some social security and some employment to be provided to the rural folks, because rural folks, they are mostly employed in farming, agricultural, but agriculture is not a year-long endeavor. Right, there are peak harvest seasons where most of the people are employed, but after that, people struggle to find employment, and obviously, then they move out to the cities. And there is a lot of pressure on cities. Urban system cannot handle so many people, provide jobs for them. So the government came up with this in 2005, right? And the idea was to provide them 100 days of employment. Government footing the bill, but now it seems they have changed it, right? So this is called Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin. So G Ramji bill, right? And this entails a higher spending by state governments. And government wants to scrap this. So new bill, right? And ये अभी इसी विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस हो रहा है. इनफैक्ट आज इंट्रोड्यूस हो गया. पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, राइट? So what was Maganrega? So this was basically largest social security and rural livelihood scheme. और इसमें लीगल राइट टू वर्क 100 डेज सभी को मिलेगा. इसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, राइट? दिस इज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. वाटर, इसमें किस तरह के काम होते थे? वाटर कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट, इरिगेशन, कनेक्टिविटी. And wage payment used to happen within 15 days. And if delayed, then unemployment allowance. Decentralized delivery, this was implemented through Gram Panchayat. Now, what used to happen, as we know, that many kind of फर्जी kind of things were happening. लोगों को गड्ढा खोदने को दे देते थे, फिर गड्ढा भरने को दे देते थे. There was no constructive work that was happening, and just they were claiming 100 days. So it was not benefiting anybody, right? There was no constructive work that was happening. तो इस तरह से चल रहा था. So न्यू बिल में इन्होंने उसको रिपील कर दिया उसको और एक नया लगा दिया. तो इसमें 100 की जगह 125 हुआ. सो दिस इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. पेमेंट शुड बी मेड, पहले 15 डेज में था, अभी विद इन अ वीक और 15 डेज. और दूसरा अलाउंसेस वगैरह दे देंगे इनको अगर नहीं हुआ तो उस दिन.
Now, there's four broad categories under this mission: water security, rural infra, livelihood infra, and disaster resilience. So the works will be under these four categories. तो इससे थोड़ा स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम होगा, ना कि पीपल यूज टू डिग ट्रेंचेस एंड देन फिल देम अप अगेन जस्ट फॉर शोइंग सम वर्क, राइट. एंड इसमें एक और चीज है कि इस जो एग्रीकल्चरल पीक सीजन है उसमें ये डेज इंक्लूड नहीं होंगे, राइट. सो दे विल नॉट शेड्यूल दिस वर्क ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स. तो उस टाइम पे दिस पीपल आर नीडेड ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. सो उसके अलावा दे शुड बी गिवन 125 डेज ऑफ वर्क. फिर इसमें बायोमेट्रिक फर्जी वाला ना हो, उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग ऑफ वर्क साइट्स, ऐसा भी प्रपोज किया गया है पहले, जो कि नहीं था, राइट. नोबडी वाज इवन अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. फंडिंग एंड कॉस्ट शेयरिंग, राइट. सो इसमें नाउ 60% गवर्नमेंट देगी फॉर मोस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स पे 90% और यूनियन टेरिटरी में 100%. So this is going to be a big problem for the state side. So there's going to be a lot of hue and cry when this is discussed in the parliament, because obviously the states are already hard pressed for funds, and now they'll be asked to shell out 40% more, right? So in contrast, MGNREGA was basically funded 100% by the center, right? तो ये चेंज हो गया इसमें, तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी. गवर्नमेंट का रैशनल ये है कि दिस इज इन लाइन विद द मॉडर्नाइज्ड, इम्प्रूव्ड विद द ब्रॉडर विजन ऑफ विकसित भारत, राइट. So that's the rationale. इसमें लोगों को प्रॉब्लम हो गई, राइट. प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैव टेकन अ सीरियस ऑब्जेक्शन कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों इसमें से निकाल दिया, राइट. एंड इसमें अगेन शिफ्टिंग ऑफ फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके भी लोग थोड़ा सा हल्ला कर रहे हैं, राइट. तो दैट्स इट. ऑल दीज आर बेसिकली देन वर्ड्स. ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि एनुअल एस्टिमेटेड बजट जो है इसका 1.51 लाख करोड़, राइट. इंडिया का जो ओवरऑल बजट है, बजट ऑफ इंडियन दिस थिंग इज 50 लाख करोड़ रफली, 48 or 50 lakh crore. उसमें से 1.51 lakh crore is basically for this MGNREGA scheme. Okay, so that's about your MGNREGA. This much you should know. That's good enough. Then we move to this SIR, right, which is this special intensive revision. Here, this has come out for West Bengal, and 58 lakh names have been deleted in the draft SIR. See, so anyone, what is SIR? What do you understand? Why it is being conducted? So can anyone shed some light on it before I give the details? No one has any idea what is SIR? In fact, a lot of deaths have happened. I don't know if you've been reading. BLOs, which are block level officers, right? So these are government employees who have been tasked with collecting this data, and they've been working under tremendous strain, and many of them have lost their lives. Yes, Janvi. Sir, well, I'm not aware of everything. I'll just share what I am aware of. Yes. So I think this is like a filtration process to check, to keep migrants in check. Unchecked migrants they are trying to find. I think that's what is the motive. Okay. See, that is Go ahead. Yeah, and that is also one other side that I felt was the elections in West Bengal. People were suspecting that some things were happening, some untoward things were happening in the elections, where they found that a lot of fake voter IDs were being used and utilized. So I think this was also an effort to check that. I'm not sure how much of it is correct. No. See, your understanding is okay. Only thing is it needs to be refined. See, what is ultimately we call ourselves the biggest democracy, right? And one of the very important pillars of democracy is the electoral rolls, right? Electoral rolls means the registered voters, right? So we have almost 100 crore voters, 98 crore or 99 crore voters who are registered, and they vote in the elections, right? Different elections, state elections or general elections. Now, what happens is that there is
these voters or these people, right? It's not like a static thing. There are many who die, right? So lakhs and lakhs of people between two elections, they would be dead, right? Then there would be some who migrated somewhere out, who went out, who are not traceable also at times. And then there are some who are living there, but ostensibly they are not legal or they are not citizens of the country, but they have and these are mostly true for the border areas, right? Where people come in from the surrounding countries like Bangladesh, mostly Bangladesh. So अगर हम असम का हमारा part देखेंगे and we see Bengal, West Bengal, so they share a huge boundary with Bangladesh, which is quite porous that way, and a lot of infiltration happens. So in these neighboring, even Bihar to that to some extent. तो यहाँ पे इनको ये है कि there are many voters who are either not there or who are nakli. So it is not with respect to Bengal only. This is an exercise being conducted nationally. It becomes more relevant in West Bengal because next year in 2026 we have West Bengal assembly elections, right? And it's quite a heated contest. It is supposed to be. So BJP is trying hard to make its dent over there. So they feel that a lot of voters out there are not legitimate, right? So this is an exercise to identify those and remove their name from the rolls. So now a Bengal draft SIR has just come, which has got 8 lakh names. They've got deleted. Now this 58 lakh names is very important here because it constitutes almost 8 to 9% of the total electoral roll. So if let's say there are in all 6 crore people who are eligible to vote, out of that, if just imagine 58 lakh voters are not there, then and suppose they were going to vote for maybe XYZ, then obviously the XYZ party becomes a big sufferer. So this has got a severe repercussion, right? So 58 lakh names deleted, first draft aa gaya isme, right? So comprehensive voter list revision, this is done by ECI, right? Election Commission of India, to remove ineligible voters, duplicate entries, errors and outdated records, ensure free and credible elections. Now इसमें रूटीन एनुअल रिविजन्स की जैसे नहीं होता, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन, डोर टू डोर सर्वेज, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स. सो वेरिफिकेशन इज वेरी इंटेंसिव, राइट? सो इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट इलेक्टर रोल पब्लिश किया अंडर स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड दिस. इसमें से 58 लाख रिमूव हो गए. This is one of the largest voter cleanup exercise in Bihar, in Bengal in recent times. So 58 lakh names क्यों delete हो गए? Deceased voters, like people who died, but still they remain on the rolls. Migrated voters, people who have shifted. Duplicate registrations, right? तो ऐसे भी लोग हैं जिनके की एक से ज्यादा जगह पे enrolled है वो, तो ये भी एक वायलेशन है. Untraceable voters, जो कि मिले ही नहीं अपनी वहां पे. And incomplete documentation, failure to submit or verify. These are supposed to be those people who are illegitimately living, let's say, in that particular area, right? So these 58 lakh names comprise of all of these. 58 have been identified. इसमें से ये अब data दिया है, ये कोई we don't need to get into too much of this data here. Don't need to remember that. अलग-अलग category के लोग बताए गए हैं. So this is about 8 to 9%. It's a major recalibration of voter data, right? And this is one of the largest SIR exercise conducted in single state in recent years. Now, obviously, this is a challenge to Mamata Banerjee, right? So she's kind of taken the fight, she's picked up the gauntlet, and she's saying no one will have to go to Bangladesh. Don't worry, I'm there. Not even one person, if he's a legitimate voter, will need to go anywhere else, right? So she's fighting hard. No resident will be pushed. People are unnecessarily scared. We'll stand by every genuine citizen. So there are certain border districts there where this panic is more prevalent, right? And they are poor migrant minority and they lack complete documentation. So BJP, so again TMC and BJP. So if you see the map, right? So all this Murshidabad and all this north, ये सारा जो area है, this is basically adjoining Bangladesh, right? इस तरफ का जो सारा area है, this is all Bangladesh. So you can very well imagine how it is easy to cross over and come to this side. All right, so Mamata has certain dharna, varna, and all of that. Sir is controversial because elections are due in 2026. Many people who are genuine voters, they fear that we will be disenfranchised. That means we will not be having our voting rights. And
there's an NRC like anxiety which is there. असम में एक नेशनल रजिस्टर था जिसको तो उसके जैसे लोग इससे डर रहे हैं, राइट. पीपल आर अफ्रेड, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की लॉन्ग हिस्ट्री है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन की, राइट. एंड पीपल बीइंग फेयर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन टू बांग्लादेश. तो लोगों को लग रहा है अगर हमारे पास सी सपोज somebody is a genuine citizen born in Bengal but doesn't have the complete documentation, so he has the apprehension that he will be caught and sent back to deported to Bangladesh. तो ममता जी इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा शायद ना हो. तो एनीवे दिस विल बी रिव्यूड. अभी ड्राफ्ट है ये, दिस इज ड्राफ्ट. दिस डजंट मीन दैट इसमें लिस्ट में जिसके नाम है तो दे कैन चैलेंज, right? So 58 lakh names will be released, and if people find that their name is there which is incorrectly there, then they will challenge it, and then there will be correction of mistakes. तो ये यहाँ पे उसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको ये अगर अपना ऑब्जेक्शन डालना है तो इस तरीके से ये चीजें आप डाल सकते हैं, राइट. ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है मिड जनवरी तक. तो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन आ गया है. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, फाइनल इलेक्टोरल रोल फरवरी में आ जाएगा, राइट. सो दिस मैटर्स टू इंडियन डेमोक्रेसी, right? So this is important. All right. So that was about sir. Yes, Lavanya. Sir, I just had a doubt, like certain political topics and certain global politics regarding war situation and tariff and all. Sir, during interviews, are we supposed to take a strong opinionated stand, or should it be like how are we supposed to answer certain questions? Very good question. Suppose for this particular case itself, somebody asks you that do you think that this SIR process or this SIR draft electoral roll process in West Bengal is justified? What are your views regarding this? Now, it's very important to be as objective as possible and not to take any sides. Be very rational. Don't come across as favoring any party A or any party B, because you never know what is the political orientation of the person who's sitting across you. Suppose the person sitting across you is a fan of Mamta Didi, and we start singing tunes of BJP, then you sure Yeah, that, correct. Yeah. तो आपको बहुत न्यूट्रल रहना है उस केस में. You have to be kind of diplomatic. See, you can give your views. You say that, see, this SIR is a very, very fruitful exercise. It's a very important exercise because we need to clean up the electoral rolls, because this is not a static thing. And while there is always a fear that there'll be infiltration of people from Bangladesh, however, I'm sure the government takes steps to keep that in check. And I'm sure that this particular process, if let's say somebody's name is there which is not correctly there or unjustifiedly there, then they will challenge it and it will be looked into. So I'm sure the process will be fair and neutral to everybody, and ultimately whoever does not deserve to be there will not be there. So to that extent, I really support this exercise. But if this exercise is being conducted in order to score some political points and be one up on your opponent, then it is wrong. That's it. तो आपको अपने Okay. वर्ड्स थोड़े से उस टाइम केयरफुली चूज करने हैं. आपको उसका क्रक्स समझना है कि उसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो निकाल ली जाए, और जो इस तरह की जो मड स्लिंगिंग और ये सब जो चीजें हैं ये ना सामने आए. बस दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. दे वे ट्राई टू प्रोवोक यू, ओके, बट देन यू कीप योर न्यूट्रल स्टैंड. यस. I mean, yes, sir, I've actually like read on Reddit and all that certain people were telling their opinions कि उनको बहुत प्रोवोक किया था कि एक साइड opinionated आंसर दो, डिप्लोमेटिक मत खेलो and all. So, sir, in that situation, like how नहीं, इसमें should we डिप्लोमेसी की handle? कोई बात भी नहीं है. इसमें नहीं डिप्लोमेसी की मतलब कोई बात ही नहीं है. इसमें आप no देखो, no no. आप उनको क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो भाई बड़ी अच्छी प्रोसेस है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, Hmm. ठीक है. और हमारे हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम ठीक से करेगी, बिकॉज इट इज एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, एंड देयरफॉर इट शुड वर्क इन दी इन नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, बट इट शुड वर्क इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Right now, there have been reports every other day. We keep hearing vote chori, this story and that, but nothing has been established. Okay, depending upon which way you look at it, you will find fault in the other party, right? So Correct. at least, so now, if suppose it has gone to the court and the court has ruled that yes,
these parties were guilty, then we can say that yes, they have done something wrong. But right now, this is just a matter of opinion, and it is just a media which is it is being played around the media. So how can how can somebody take that kind of judgment here and say that it is wrong or right? दैट्स इट. Okay, दूसरी बात देखो, yeah. एक और चीज बताता हूँ आपको कि मतलब सी आई वुड लुक एट एनी डिस्कशन ऑन एनी फोरम with a pinch of salt. Okay. Because many, I mean, see, because I can tell you very kind of little bit more confidently, because I have been training people for interviews, and I have got their transcripts, I got their views, whatever they have been talking, what actually have transpired in those, I mean, thousands of students. So I can tell you, fairly well कि ठीक है, आपको पुश करते हैं, वो उनका काम है करना, लेकिन आपको भी अपना स्टैंड लेके यू कैन जस्ट in the end say that no, I mean, this is all that I understand out of it, and this is the best that I can say. आपको अगर वो बोले स्टैंड लेने की, तो बोला ऑन व्हाट बेसिस आई कैन टेक अ स्टैंड? इज देयर एनीथिंग आउट देयर व्हिच आई कैन रीड एंड से कि नहीं ये बिल्कुल सही है, समथिंग डेफिनेटिव? ये तो नहीं है ना. हाँ, अगर कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि देखिए इन्होंने वोट चोरी करी है, तो आप बोल सकते हो. या कोर्ट का वो आ गया कि नहीं नहीं, इन्होंने वोट चोरी नहीं करी है. ये कोर्ट में तो गया ही नहीं अभी. ये तो अभी डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में, डिस्कस हो रहा है मीडिया में, अलग अलग जगह पे. तो अभी कहाँ, अभी हाउ कैन वी एस्टैब्लिश कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई? है ना. राहुल गांधी हैज मेड सर्टेन एलिगेशंस, अमित शाह हैज रिस्पोंडेड टू हिम. तो हाउ एम आई एज अ सिटीजन, हाउ एम आई सपोज टू इन्फर कि ये तो, अगर सपोज आई एम लेट्स से बीजेपी दिस थिंग फैन, देन आई विल से नहीं नहीं, अमित शाह सही कह रहे हैं. अगर मैं अगेंस्ट हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं, वो सही बोल रहा है. लेकिन किस बेसिस पे? तो आप अगर इतना बोल दोगे, तो दे विल नॉट सी इट. आई टेल यू, इट डिपेंड्स अपॉन द वे यू टॉक. कितना आपकी डेप्थ है, थोड़ी सी आपको पता है उसके बारे में, नहीं पता है. अगर नहीं पता है, तो फिर वो आपको हिला देंगे, राइट? Correct. हाँ. यस आशीष. Okay. सर इसी चीज सर इसी चीज के लिए जैसे should we or do we quote some of the newspapers in stating our facts? Yeah, we should not. आप बोल सकते हो कि भाई इस न्यूज़पेपर में ये आया था, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में आना आजकल, मतलब यू कैन मे बी मेक अ लिटिल ह्यूमरस कमेंट देयर कि यार मीडिया, कैन यू रियली ट्रस्ट द मीडिया दीज डेज? बिकॉज मीडिया इज दीज डेज इट्स पार्टीसन. whatever comes out, you cannot say, you cannot say that that unless there is some authority which has adjudicated the whole matter and given a verdict. पेपर में आपने पढ़ा है, ठीक है, बट पेपर में क्या रिपोर्टेड है, वो कितना सही है, ये भी आपको क्या पता. पेपर ने अगर अपना कोई ओपिनियन दिया है, राइट, आप बोल सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग इट. देखो, ये सब चीजें अभी क्लियर होती जाएंगी. डोंट टू गेट अनड्यूली ऑब्सेस्ड बाय इट राइट नाउ. देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. अभी धीरे धीरे अलग अलग इश्यूज पे हमें अपने व्यूज, पहले तो आपको कुछ उसको पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है, फिर अपने व्यूज बनाने हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, राइट? देन थिंग्स विल बिकम, विल रीच दैट सिचुएशन वेयर यू कैन talk in that interview and take a stand if you want to, or not take a stand, or give your point of view, whatever it is, right? Okay, sir. All right. So good, but good discussion, good point. I think you should please come up with such points. It's good to get clarity right from the beginning. Okay, now Mexico has also warned more than 50% import tariffs. So this was a bit of a surprise, because obviously we used to consider Mexico our ally, and not like US, who have implemented more than 50% tariffs on us now. But why this happened? So anyone is aware? What is the reasoning behind this? Why has Mexico imposed 50% tariffs on us? एकदम से क्या सूझी उन्हें? Yes, Hitesh. So I'm not sure, but I think Mexico wanted to impose tariffs on China, and Hmm. that included Hmm. that Hmm. actually influenced it to impose tariffs on India, and Hmm. also to earn some brownie points from US. Right, right, correct. See, Mexico has got some free trade agreements with some countries, and then there are some non-free trade agreement countries. Obviously, China is the biggest of them, and India is again another country which we don't have any free trade agreements. Now we will talk about one day a free trade agreement, because people who are going for IFT interviews should know this inside out. Others also should know, right? So free trade agreements हमारे चल रहे हैं अभी, डिस्कशन यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है. ट्रेड डील जो हमारी चल रही है यूएस के साथ में, राइट? So likewise, we have signed some
free trade agreement, but we are negotiating some trade agreements with some other countries. So Mexico has got some free trade agreements with certain countries, but we don't have with Mexico. So Mexico has imposed this tariff not just on us, but on all of those non-FTA countries, right? So obviously China has got a huge amount of imports. Mexico has got a huge amount of imports coming in from China. So they want to basically promote. See, why does a country impose tariff? Anyone? Why is this tariff, has become such a hot topic and hot a buzzword? Okay, ever since the time that Trump has taken his second, in fact, in his first uh, tenure also, this had become an issue, but not to the extent that it had disrupted the entire global economy. But now, in this particular, in his second term, he's turned the world upside down. Okay, as we know, last 6, 7, 8 months, there's no word which has been heard more than a word tariff. तो क्यों tariff क्यों लगाते हैं? Anyone? Let's go into a little bit of basics of tariffs here. Okay, so let me go to Kushagra first, then Ashish. Yes. Well, because the government would want to promote their domestic industry more. Yes, government wants to promote the domestic industry more. Very good. Yes, Ashish. Same, sir, reason. Same reason. Yes, Sandhya. या सर सेम रीजन कि उनको अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री और जो वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए we put import tariffs. Okay. Yes, Kaushal. Yes, sir, to balance their trade deficits and push industries in their own country. Right. Balance the trade deficit, right? So there's additional input which has come. Yes, Janvi. Sir, tariffs इसलिए one as Kushagra and others mentioned, domestic ये बढ़ाना है. Also बाहर वाले countries के साथ you have to maintain trade relations, right? But then because we are providing them with a market, we want some compensation. I guess that's the idea behind it. Right. So see, tariffs is basically a protectionist measure, right? You want to protect your industry, your companies. As we know, that US has lost its manufacturing prowess, had lost its manufacturing prowess long back, right? When it started outsourcing manufacturing to different parts of the world and predominantly China. Now, why does it happen? Why does a company, sorry, why does why does a company outsource its manufacturing? So let's say a company which is Apple, based in the US, right? So Apple gets most of its phones manufactured in China. Now it has started shifting some of that to India, Vietnam, and other countries. Why does it do it, right? So obviously, one is it's all cost, right? It is much cheaper to get the product made in China or somewhere rather than getting it made in US, because the cost in US is huge, right? In terms of particularly in terms of manpower or labor, right? The costs are pretty high. Whereas as we know, that a resource in China or in India, they will do it for 1/5 maybe, right? So cost is a very, very big factor because of which these companies outsource manufacturing. So now globalization was a buzzword, okay, 10, 20, 30 years back. After let's say the USSR crumbled, and after the US became kind of a leader of the world, चाइना धीरे धीरे ग्रो कर रहा था. तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, आउटसोर्सिंग चल रही थी, तो यूएस की जितनी कंपनीज थी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी. नाउ यूएस के में मैन्युफैक्चरिंग काफी कम हो गई, एंड ऑब्वियसली जॉब्स जो थे वो चले गए, बिकॉज manufacturing companies employed a huge number of people. The whole economy became service oriented, and the service oriented economy में जो jobs मिल रही थी वो those were more suited to people who were coming, the immigrants like Indians and Chinese and others. So Americans became very, very kind of the unemployment rose, jobs नहीं उनके पास में. तो ये सब होने से obviously there is a huge
discontent and discomfort within the whole white American ecosystem, and that's how Trump has come up. तो ट्रम्प ने उनको प्रॉमिस किया कि आई विल ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी विल गो बैक टू दोज ग्लोरी डेज, आई विल इम्पोज टैरिफ्स. तो टैरिफ लगा देंगे तो जो बाहर से सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली इट विल बिकम अनअफोर्डेबल फॉर द पीपल हियर, सो यू गाइस कैन बिकम कॉम्पिटिटिव. तो इस तरह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वापस से चल पड़ेगी. दिस वाज अ थॉट, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट, डजंट हैपन लाइक दैट, विच इज व्हाई वी विल सी अनदर स्टोरी हियर दैट चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, दैट यूज्ड टू बी 1 ट्रिलियन बिफोर बिफोर Trump announced that 50% tariffs, and now that has become even more than 1 trillion. So that means it has absolutely had zero effect on China's exports, right? So Trump wanted to curtail China's exports, but China's exports have grown, not to US, but to other countries. So we will see that, right? So tariffs are basically a protectionist measure. ट्रेड बैलेंस रिस्टोर करने के लिए, लाइक कौशल ऑल्सो मेंशन कि इसमें जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, सो अमेरिका रन्स अ ह्यूज डेफिसिट with China, right? America runs a good amount of deficit with India. That means they import more and export less. So they wanted to balance it out because they feel that they have opened their markets for us. आपके लिए तो यहाँ पे मार्केट है, लेकिन हम अपना मार्केट आप हमारे लिए नहीं खोलते हो, राइट? तो विच इज वाई they eye our market, they look at our market, but then we impose tariff. We used to impose tariffs on their products. तो जैसे कि ये तो बराबरी वाली बात नहीं हुई ना. आप यहाँ पे आ जाते हो, we don't impose any tariffs, but when we sell our products there, then you impose so much so heavy a tariff, तो हम लोग सेल ही नहीं कर पाते आपके यहाँ पे, राइट? तो all of these were factors. So now अब now coming back to this story, यहाँ पे इन्होंने मेजर शिफ्ट किया अपने इम्पोर्ट टैरिफ पॉलिसी में, और जिन कंट्री के पास में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उसके साथ में, वो इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसके ऊपर 5 से 50% तक का टैरिफ इम्पोज कर देंगे ओवर 1400 प्रोडक्ट लाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी. तो कंट्रीज अफेक्टेड ये सारी हो गई हैं, राइट? अमंग अदर्स दीज आर द मेजर कंट्रीज. इसमें 50% मैक्सिमम, मिनिमम 5%. ये सारे सेक्टर्स हैं. वी यूज टू एक्सपोर्ट लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स देयर, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑल ऑफ दीज, राइट? ये सब चीजें कवर्ड है इसमें. तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्ट करना, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन FTA इंपोर्ट्स, encourage local production and employment, and light trade policy with regional priority. This is like saying scoring brownie points. I think what someone mentioned here कि US मेक्सिको कनाडा का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसको इसकी अलाइन करना उसके साथ में, राइट? सो दे वांटेड टू गिव अ मैसेज टू ट्रम्प दैट वी आर विथ यू, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो US influence on Mexico's policy aligning with the broad North American protectionist trends. सो दिस इज व्हाट पीपल फील. इंडिया मेक्सिको का ट्रेड कितना है? ज्यादा नहीं है, फिर भी है, राइट? 5.3 to 5.7 बिलियन इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लैटिन अमेरिका. तो इसमें से 70 to 75% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेस हायर टैरिफ्स, और टैरिफ जंप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल हिट अस, राइट? इट विल श्योरली हिट अस, इवन दो द वॉल्यूम इज नॉट as much as what we used to export to the US, but it is there, right? सो इंडिया के कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स ऑलमोस्ट $1 बिलियन करते हैं टैरिफ्स में रेज, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, राइट? सो दीज आर इंडिया ने ऑब्वियसली अब इट हैज स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड एंड कॉल्स इट इनकंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी. इंडिया में टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स कि हम भी करेंगे, फिर ये अगर आप करते हो तो हम भी करेंगे. डिप्लोमेटिक टोन भी है. तो these are all ठीक है, पोस्चरिंग है. अभी क्या होता है क्या नहीं होता है आगे पता नहीं, बट दीज डेज वी कैन नॉट टेक एनीथिंग एज फाइनल, राइट? कोई टैरिफ इम्पोज करता है, फिर अगले दिन उसको रिवोक कर देता है, फिर कुछ और हो जाता है, राइट? दीज थिंग्स कीप हैपनिंग. डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंडियाज कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल मेट मेक्सिकोज VP एंड टेक्निकल लेवल इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट. तो ये चल रहा है, ये होता रहेगा आफ्टर दिस, राइट? इंडिया ऑब्जेक्ट्स यूनिलैटरल एक्शन विदाउट प्रायर कंसल्टेशन. WTO कंसर्न्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसकी कोई रेलेवेंस बची नहीं है वैसे. एब्रप्ट हाइक्स, डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट, राइट? तो मतलब आपने कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर्स को भी हर्ट कर दिया, एंड यू हार्म्ड लॉन्ग स्टैंडिंग कमर्शियल रिलेशनशिप्स. अप्रोप्रिएट मेजर्स, इंडिया ऑप्शंस. इंडिया कहता है हम ट्रेड रेमेडी कहेंगे, हम एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे. एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है
you want to, so suppose you feel that some country is dumping a lot of material, right? कोई चीज उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो वो आपके यहाँ पे बहुत सस्ते में बेच रहा है, तो आप एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, जैसे इंडिया करता है चाइना के अगेंस्ट बहुत सारी चीजों में. इट पुट्स एन एंटी डंपिंग ड्यूटी टू make it less competitive, right? CVD is countervailing duty. This is also like an excise duty which is there on Indian product. तो वैसे वहाँ पे countervailing duty लगाए थे. रिटेलिएटरी टैरिफ्स की हम भी लगा देंगे टैरिफ्स, और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट, या तो WTO चले जाए, तो ये सब चीजें ये कर सकते हैं. डिप्लोमेसी फर्स्ट एंड प्रिपेयर्डनेस टू एक्ट. इंडिया और मेक्सिको भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जिससे कि ये सब ना हो, राइट? अलायंस विद इंडिया ब्रॉडर स्ट्रेटजी, EFTA, UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इनके साथ में है हमारे. ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, राइट? सो नाउ this is exactly the opposite of globalization, which is happening, what we are seeing in the world today. They are closing borders, countries are closing borders. Similar tariff actions seem globally driven by domestic political pressures, job prediction narratives, supply chain realignment, geopolitical undercurrent. तो नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पॉलिटिक्स और इसके इसमें दिखा जा रहा है इसको, राइट? सो that's what we should, so key points we should keep in mind is the India being a non-FTA partner, therefore they are leaving tariffs on all of those, not just India. They're not singling out. We have a 5 to 7 billion trade with them, mostly those items which we saw, and most of them will be affected. And we are trying to wriggle out of it by having talks with them, or trying to tell that we can also take some measures, or maybe go for a free trade agreement with them. So that's about this particular story. Any questions or thoughts before we move to the terror attack? All right, cool. So terror attack के बारे में क्या क्या पता है हमें? Anyone? Yes, Janvi. Then I'll come to you, Kushal. So sorry, this is not about the terror attack. I had a question for the previous one. Okay. So whatever we discussed now, ये बहुत higher level का था, right? But इसमें कुछ और intricacies भी होंगी. So वो जो minute details है, do we need to know them as well? या No. एक broader picture is necessary? Broader picture is enough. That is enough. Broader picture is enough. Okay. Okay, sir. See, nobody is going to ask you that, okay, in gems and jewelry, what is our level of exports to Mexico, and what will be the impact of tariff? What is the tariff? What was the tariff earlier, and to what extent has the tariff been imposed on a gems and jewelry segment, or a machinery segment, or a automobile component segment? ऐसा नहीं पूछेंगे वो, because this is not, I mean, this is not what they are looking at, right? They are looking at whether you as a manager understand the the impact of Impacts. it, and they let's say, what are the numbers involved here, right? So numbers are important here. So 5% से 50% के बीच में टैरिफ रहेगा, ये नंबर इंपॉर्टेंट है. देन कितना आपका ट्रेड है मेक्सिको के साथ में, तो $5 to $7 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, राइट? और हमारे कौन कौन से मेजर सेगमेंट्स हैं, वो 3-4 सेगमेंट्स हमारे ये मेजर है, ये हिट होंगे. दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, अभी कोई कंट्री कुछ और लगा देगी, कोई कुछ और लगा देगी, तो वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज. सो व्हाट वी शुड बी नोइंग इज द ब्रॉड स्टोरी. जैसे मैंने आपको हर स्टोरी, जो हमने मनरेगा की स्टोरी बात की, उसमें भी जो हमने मेन नंबर्स देखने हैं आपको, राइट? नंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजर, but numbers also not on a very minute detail, but kind of a broad overview you should have, right? Yes, Okay. sir. Thank you. Okay. Yes, Kushagra. Sir, so this terror attack was basically an anti-Semitic attack on the Jews, sir, when they were celebrating their festival in Australia's beach. So, like, this was the terror attack mainly. Okay. Yes, And question. sir, हाँ, no, बोलो क्या बोल रहे थे आप? sir, this had a significance because that festival was had in relation to that ceremony, right, when Jerusalem was captured some time back in history. So I think it also had linked to a bit of anti-Zionic movement, because the Zionic movement says like they want to capture Palestine also.
So like it was kind of an anti-movement by the Muslims that like they don't for fighting for the Palestine. So I think it had links to that also. Right, right. Okay. Yes, Kaushal. So as Kushagra mentioned, attack, I mean, killed, two Muslim men killed 16 people on Bondi Beach on Hanukkah. Uh, Israel's prime minister also commented that this is due to Australia siding with Palestine, which has given rise to anti-Semitic movements across Australia, and these violences against Israeli people has increased in the last 2 years by a significant number as well. Right, right. Correct. Fair enough. So, okay, yes, Sandhya, you want to add something? I think mostly they have said, but I think in today's newspaper, the additional things are given about those who attacked here. Like the two people who attacked, their origins are it is mentioned that they are from India, and it was also mentioned that they are linking it to Islam also कि उनके कार से इस्लाम के flags मिले हैं, so it can be linked to that. And also like terror attacks have been increasing throughout like but various places, so it is one of the topic. राइट, राइट, यस, करेक्ट. तो उनका जो ओरिजिन था वो पता पड़ा कि वो इंडिया के हैदराबाद से ही वो गए हुए थे वहां पे. तो इनिशियली पीपल वर सेइंग कि वो पाकिस्तान के हैं, उनका बेस पाकिस्तान में था, लेकिन वो बाद में पता पड़ा कि हैदराबाद के हैं. नाउ देखो बहुत सारी चीजें इधर हैं, लाइक व्हाट यू ऑल मेंशनड हियर, that this anti-Semitism is on the rise, okay, and especially in the wake of Israel-Hamas war and the Palestine issue. Right now, Australia has said that we recognize Palestine. Right now, there are different. There are some countries which recognize Palestine, some countries which favor two-state solution. Now, see, we will have a complete session on this once Israel-Palestine, because this is a very, I mean, the origin of it goes back 3,000 years. तो ये इतना और इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है. देयर बीन डिफरेंट वॉर्स in on the Arab or Israel के जो wars हैं वो, तो it's like the Arab world itself was against Israel there, and Israel has been fighting all of them, and now they had reached something called as an Abraham Accord. बीच में बहुत सारे दूसरे दूसरे accords भी हुए हैं, but there was no permanent peace which was found. And then Palestine भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा है. गाजा इज रूल्ड बाय Hamas. Hamas is not really supposed, I mean, it's like a more of a terrorist organization. And so it all kind of went into a tailspin when they attacked in 2023 on 7th October. Israel में जाके उन्होंने नाइट क्लब में अटैक किया था, and they killed and abducted. तो 1200 लोग मर गए थे, and then they had taken hostages. And then, as we know, this Israel-Hamas war started, and it is not yet completely got over. And despite there have been several truce or some bit of ceasefire and all, but all over the world, as we know, in US, in Europe or wherever it is, this Free Palestine movement, and people in the universities and a lot of other places were holding demonstrations. So there has been a lot of anti-Israel kind of protests also, and also attacks. And in Australia also, as mentioned by I think Kaushal and Kushagra also, that the attacks on Jews and protests and all have been increased significantly. And this was one such. I mean, this was the second worst terror attack in Australia, right? Australia doesn't have like we have, we 16 and all people. हमारे यहाँ तो ऐसे हंसी खेल में हो जाता था. Of course, not recently, but there was a time when every other day we had some kind of a terror attack. So this attack is basically in line with all of those anti-Semitic things which are happening globally, right? तो अब इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. यस कुशागर.
Sir, I have a doubt. Sir, Hmm. it's a generic question that, sir, does US have a soft corner for Jews? Because, नहीं like, नहीं, यूएस they इसराइल, देखो यूएस इसराइल की तो बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, राइट? यूएस इसराइल के बहुत स्ट्रांग रीजंस, स्ट्रांग कनेक्ट्स हैं, एंड आई थिंक वी विल डिस्कस दैट आल्सो जब हम वो इसराइल और पैलेस्टाइन वाला डिस्कशन करेंगे, देन वी विल, सो इसराइल इज एंड यूएस आर स्ट्रांग एलाइज। अगर आप देखोगे कि यूएस को पूरे जो मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल करना है या जो भी वो करना है, वो इसराइल इज देयर पार्टनर देयर, राइट? बिकॉज अदरवाइज, सो ऑब्वियसली सी यूएस, दूसरी बात ये है कि यूएस तो अपना मतलब निकालता है हर जगह सभी से। और अगर आप यूएस में देखोगे कि जो कम्युनिटीज कई जो, आई मीन दीज गाइज आर वेरी रिच देयर, इसराइल, द ज्यूज आर काइंड ऑफ, दे रन मेनी कॉर्पोरेशंस फाइनेंस सेक्टर में, और काफी सारी जगहों पे इनका लीगल सेक्टर में, और इनका काफी मतलब दे आर वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर। तो जूस और इसराइल और अमेरिका, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, राइट, वेदर इट इज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, they all work hand in hand, and Israel are technically also, they are very very advanced that way. तो इनका काफी, they are very close. So obviously, जो इनके एनिमी है, तो लेट्स से ईरान, राइट? ईरान इज नंबर वन एनिमी ऑफ Israel, right? So US also, Iran is the enemy number one of US also, right? तो कई सारे तो कॉमन इनके एनिमी है now on some issues, but on most of the issues they support, right? They support Israel. ओके, सो यहाँ पे 14 दिसंबर को हुआ बॉन्डी बीच, विच इज अ प्रोमिनेंट बीच इन सिडनी, हनुक्का सेलिब्रेट कर रहे थे, राइट? एंटी सेमेटिक मोटिवेशन, एंटी सेमेटिसिज्म इज बेसिकली ऑल द अगेंस्ट द यूएश, एंड दिस इज द डेडलीस्ट मास शूटिंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस दिस। ये यहाँ पे बॉन्डी बीच का आपको सिडनी यहाँ पे है, एंड दिस इज द बॉन्डी बीच, right? If any of you have been there, and background is this: there was a Hanukkah celebration. It's a major Jewish religious festival, और ये ओपन होता है पब्लिक को। यहाँ पे Jewish families, community leaders, टूरिस्ट, बाय सेंटर सब आते हैं। बॉन्डी बीच इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, जैसे हमारे यहाँ जुहू बीच है बॉम्बे में, वैसे ही वहाँ पे बॉन्डी बीच है। ऑफकोर्स जुहू बीच इज आई मीन इट हैज गॉन टू द डॉग्स, बट बॉन्डी बीच इज स्टिल वेरी नाइस। और शाम के टाइम पे हुआ, दो गनमैन आ गए, आई मीन आई एम श्योर एवरीबडी हैज सीन दिस, बहुत सारे इसके वीडियोस वगैरह घूम रहे हैं इधर उधर। अब इसमें एक और बहुत बड़ा एंगल आ गया है, वो एंगल है जो एक ये आदमी कूदा था बीच में, अहमद अल अहमद, राइट? ही वॉज इंजर्ड वाइल ब्रेवली डिसआर्मिंग गनमैन। इसमें लोग कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट। इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, सुनिए किसी ने? सी व्हाट दे आर सेइंग दैट ये जो दो थे, राइट, सो दे आर बेसिकली मुस्लिम्स, राइट? इस्लाम, so everywhere we know that Islam has earned a bad name in terms of terrorism, that people say that okay, this is one religion which basically supports most of the terrorist activities around the world. तो यहाँ पे इन्होंने ये एक ऐसा थ्योरी निकाल के ला रहे हैं कि दिस फेलो, ये एक स्टेज्ड चीज थी, ये जो इसके पीछे कूदा, क्योंकि उसने जब कूदा फिर उसने उसकी गन ले ली थी, एंड देन ही डिडंट किल दैट शूटर। तो लॉजिकली if he had snatched the gun, then he should have shot the shooter, but he allowed him to walk away, and after this fellow allowed him to walk away, that person killed one or two more. तो लोग कह रहे हैं कि ये इसने नौटंकी करी है, क्योंकि ये भी अहमद अल अहमद है, तो ताकि लोगों को फिर ये ना हो कि ओनली मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, सो दे वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ स्टोरी कि देखो मुस्लिम मारते नहीं बचाते भी हैं, तो you can't label every Muslim as a terrorist. So that's the kind of a conspiracy theory which is floating around. Yes, Kushagar? यस सर, मैंने सुनी है सर ये थ्योरी। और सर लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जिस हिसाब से उसने ओवर पावर करा उस टेररिस्ट को, तो वो बहुत ही मतलब सर ऐसे लाइक एक तरीके का फेक लग रहा था कि मतलब एक आप आम टेररिस्ट को ऐसे ओवर पावर कर रहे हो और फिर आप शूट भी नहीं कर रहे। तो लाइक ये वाली थ्योरी मैंने भी सुनी है दो तीन जगह। करेक्ट करेक्ट। तो अब देखो
अब कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि यार क्या ये सच है, तो आप ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि हमने ऐसा सुना है, राइट, वी हैव हर्ड दिस स्टोरी, वी रेड अबाउट दिस, but obviously this is being investigated, so we can't conclusively say whether it was done or not. However, this is being talked about like that. बस इतना बोलना है आपको उसमें। वो चाहे आपको बोले कि नहीं नहीं आप अपनी तरफ से बताओ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोला आप हमें ऐसे कैसे बता दें, हम वहां पे थोड़ी थे। तो वी कांट रियली say whether it is true or it is false, but all we can say it is being investigated, and when we have the results of the investigation out, then it will be clear. Till then, it is just a hypothesis, right? Unless proven, we can't confirm. So ऐसे करके हमें अपने व्यूज प्रेजेंट करने हैं, राइट। फिर ये सारी चीजें हैं, यहाँ से गया वो इधर, यहाँ पे यहाँ पे ओवर, ये जो बीच में बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे उसने कुछ ओवर पावर किया, तो फिर वो उसने जाने दिया, तो ये फिर चल के वो यहाँ तक पहुंच गया, फिर यहाँ पे जाके उसने मारा एक दो को, फिर यहाँ पे मारा गया उसका बाप, जो 50-year-old फादर था उसका, वो मारा गया, और दिस फेलो वाज टेकन इनटू कैप्टिविटी। राइट, तो इस तरीके से थिंग्स प्रोसीडेड। 16 पीपल किल्ड, इसमें रैबी जो उनका प्रीस्ट होता है, रैबी बोलते हैं उसको, तो रैबी भी मर गया, एंड एक अटैकर शॉट डेड बाय द पुलिस। 29 पीपल इंजर्ड हो गए हैं, और काफी क्रिटिकल भी हैं कुछ लोग उनमें से। 2 प्राइमरी अटैकर्स हैं, हो सकता है कोई तीसरा भी हो। वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स भी मिले वहां पे उनको, राइट। और but ठीक है, I think this is official government response. Attack is an act of evil. This is okay. This is not really very increased security कर दी गई है वहाँ। सिनागॉग उन लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, हमारे यहाँ जैसे टेम्पल होते हैं। सभी लोग कंडेम कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको। वाई वॉज द Jewish कम्युनिटी टारगेटेड, तो ये कोई रैंडम नहीं है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल, ये चीजें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सिंबॉलिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस रूटेड इन एंटी सेमिटिज्म एंड एक्सट्रीम वायलेंस। तो ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, एंटीसेमिटिज्म क्या है? तो एंटीसेमिटिज्म रेफर्स टू हेट्रेड, प्रेजुडिस और हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूज एज रिलीजियस, एथनिक और कल्चरल ग्रुप, राइट। सो समबडी माइट आस्क यू, ये पूछ सकते हैं भाई व्हाट इज एंटीसेमिटिज्म? सो एंटीसेमिटिज्म ये है, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ हेट्रेड रिकरिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। एज आई सेड, ये 3000 साल से चलता चला आ रहा है, जिसकी हिस्ट्री हम एक दिन ट्रेस करेंगे। सिंबॉलिक टारगेटिंग ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल, तो हुनका बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान टेररिस्ट जो है वो कोई 15 अगस्त पे अटैक कर देते हैं, कोई एक सिग्निफिकेंट टाइम पे। तो दिस हनुक्का इज अ फेस्टिवल सिंबलाइजिंग सर्वाइवल अगेंस्ट परसिक्यूशन, रिलीजियस फ्रीडम, जूइश आइडेंटिटी एंड रेजिलियंस। तो इसी दिन अटैक करना सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू देम, राइट। तो दे रिप्रेजेंट कल्चरल विजिबिलिटी, अट्रैक्ट फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, गेन्स मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो इस दिन इनको मैक्सिमम उससे लिवरेज मिलता है, इसलिए ये करते हैं। ग्लोबल राइज इन एंटीसेमेटिक एक्सट्रीमिज्म, तो ग्लोबल इंक्रीज हुआ है अटैक्स ऑन सिनागोग्स, जूइश स्कूल्स, ऑनलाइन हिट, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। पैलेस्टीन हमस, जो इसराइल हमस जो वॉर चल रहा है उसको लेके, एंड polarization on social media, right? Social media is something which is kind of fueling the fire everywhere, right? Whether it is country India or it is the US or anywhere, radicalization narratives, spillover effect, तो ये सब है इसका। Why Australia specifically? Australia में small but visible Jewish community है, they are well integrated in public life, active in cultural and religious events, एंड द एक्सट्रीमिस्ट जो है इनका एक मैसेज देना होता है दुनिया को कि आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो, चाहे आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चले जाओ, डेवलपिंग में चले जाओ, या आप डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, एंड दे वांट टू ग्लोबलाइज देयर आइडियोलॉजी, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो इन दिस। तो ओके, एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दैट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी? ठीक है। Now, how Xi Jinping beat Trump in the trade war. So in this story, what we are going to look at is, as I mentioned earlier, that ट्रम्प ने जब अपने टैरिफ लगाए थे, राइट, अप्रैल में पहले लगाए थे उसने, उसके बाद में
3 महीने के लिए लेटअप दे दिया था कि चलो 3 महीने के बाद मैं लगाऊंगा, फिर कुछ लगाए, एंड देन दे हैड अ ट्रेड डील विथ चाइना, एंड देन अगेन दे इंक्रीज। तो ये खींचातानी इसकी होती रहती है। एक बार तो रिडिकुलस लेवल तक पहुंच गए थे, इसने भी लगा दिए, उसने भी लगा दिए, तो ये सब इनका चलता रहता है। तो ट्रम्प हैड एक्सपेक्टेड कि चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन है। दैट मीन्स चाइना एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन more than what it imports, which is huge, right? And obviously, a majority of that was coming from the US. So Trump wanted to balance out this. But ultimately हुआ क्या, ये देखते हैं। तो $1 ट्रिलियन शॉक, व्हाट टैरिफ, हाउ शी जिनपिंग बीट ट्रम्प इन ट्रेड वॉर। तो despite nearly a decade of US tariffs, China's trade surplus surged to record 1.08 trillion, demonstrating its resilience and dominance in global exports. तो यहाँ पे चाइना ने सिर्फ अपना एक इकोनॉमिक एडवांटेज ही नहीं अवॉइड किया, बट एक हिस्टोरिक एक्सपोर्ट बूम लेके आ गए, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन्होंने किया। तो 1.08 ट्रिलियन, विच इज 21.7% इंक्रीज। जस्ट इमेजिन कि कम होना तो दूर, 21.7% इंक्रीज हो गया। डेमोन्स्ट्रेट चाइना एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स। ये फिगर्स हैं ग्लोबल इसके। तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से this has reached the highest ever level, right? This is how the trade surplus has grown, right? From 2.3 ट्रिलियन से लेके 2010 में अब 1.08। हाउ चाइना अडेप्टेड एंड स्ट्रेंथन्ड इज एक्सपोर्ट मॉडल। तो चाइना ने क्या किया कि होशियारी से अपनी डिपेंडेंस यूएस से रिड्यूस कर ली और मैसिवली एक्सपैंड कर दिया अफ्रीका में। 42% इंक्रीज, यूरोप 15% इंक्रीज, लैटिन अमेरिका डबल डिजिट ग्रोथ। तो वट एवर दे लॉस्ट बाय वे ऑफ exports to US, they more than made up for it by increasing their exports to these areas, right? Supply chain re-engineering कर ली उसने। उन्होंने क्या किया, अपनी फाइनल असेंबली को साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भेज दिया। तो इन कंट्रीज से अगर कोई माल आ रहा है तो उसके ऊपर तो टैरिफ इतना नहीं है जितना चाइना के ऊपर है, तो उसको भी इवेट कर लिया इन्होंने, राइट? तो बाईपास यूएस टैरिफ थ्रू ट्रांसशिपमेंट एंड ओरिजिन चेंजेस, कंटिन्यू टू सप्लाई कोर कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना, मेंटेनिंग सप्लाई चेन डोमिनेंस। तो इन्होंने होशियारी से दोनों तरफ एक्ट किया। एक तरफ तो मार्केट्स में एक्सपैंड किया और दूसरी तरफ सप्लाई चेन री इंजीनियर कर ली। करेंसी एडवांटेज, नाउ इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा कि जो हमारी करेंसी है दैट हैज रीच्ड $91, आई मीन $1 इज इक्वल टू 91 रुपीज। तो ये क्यों हो रहा है? Right? There are many reasons for it. We will discuss that also. Maybe in the next story. अभी इसमें आज कैप्चर नहीं हुई है, नेक्स्ट स्टोरी उसमें कैप्चर करेंगे। Now, first of all, is a weaker currency good or bad? Anyone? In itself? Yes, Ashish. Sir, I think it could have both the implications. सर पॉजिटिव ये हो सकता है कि इट वुड फॉर इंडिया पॉजिटिव ये हो सकता है कि सिंस मतलब इंडिया के गुड्स विल बी चीपर, सो इंडिया कुड हैव increase its exports, which would help in trade deficit. And one of the demerits could be कि obviously हमारे लिए बाकी चीजें expensive हो जाएंगी, so that would also be a problem. Right, right. देखो ये डिपेंड करता है कि आप एक नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हो कि नेट इंपोर्टिंग कंट्री हो। इफ यू आर अ नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री द वे चाइना इज, which means it has got a trade surplus of more than 1.08 trillion. For them, a weaker currency will mean that they are more competitive globally, right? And in any case, they are earning foreign exchange, right? इनके यहाँ पे foreign exchange तो earn कर ही रहे हैं ये। इंडिया जैसी कंट्री जो कि नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, हमारा सरप्लस नहीं होता। और उसमें भी हमारा एक जो डेफिसिट है वो कम इसलिए हो जाता है बिकॉज आर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर ह्यूज। जो हमारी आईटी सर्विसेज हैं दे फॉर्म अ बिग कंपोनेंट ऑफ आर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। बिकॉज इफ यू रिमूव दी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फिर तो हमारा बहुत बुरी हाल हो जाए, हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो
अगर हमारा नेट डेफिसिट है, दैट मीन्स वी इंपोर्ट मोर देन व्हाट वी एक्सपोर्ट, देन falling rupee will hurt us badly because our imports will become more expensive. Yes, exports हमारे सही होंगे, cheaper होंगे, but because we are a net importing country, so the pain will be bigger on the import side, right? तो एक तो अब ये क्यों हो रहा है हमारा, तो बिकॉज सी लॉट ऑफ these foreign portfolio investors, FIIs, are selling their equity and other assets and moving out because of a currency depreciation. They have lost out on the returns, right? अगर 6% तो मार्केट में उनको इसी से नुकसान हो गया कि करेंसी गिर गई, राइट? तो इंडिया के सिनेरियो में फॉलिंग रुपी एट दिस लेवल इज नॉट वेरी गुड, ओके, अनलेस यू कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ डॉलर्स. चाइना डेलिबरेटली अपनी करेंसी, उसकी रेनमिनबी जो करेंसी है उसको वीकर रखता है वो, ताकि वो एक्सपोर्ट्स उसके चीपर रहे एंड इट कैन डोमिनेट द ग्लोबल ट्रेड. ओके, तो चाइना को करेंसी एडवांटेज है. Chinese domestic inflation fell when Western inflation rose. Chinese goods have become globally competitive despite tariffs. Low margin strategy in emerging markets. तो चाइना ने ये किया कि ये जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये तो इनके पास पैसा तो है नहीं, तो उसमें एक्सेप्ट कर लिया लो मार्जिन्स. मार्केट कैप्चर के पीछे गया वो, राइट? जैसे जियो, जैसे हमारा जियो ने फ्री में पहले दे दिया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोगों को आदत लगा दी, फिर उसके बाद में रेट बढ़ाना शुरू किया. तो वैसे ही इन्होंने भी मार्केट कैप्चर करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस कर दिए. बिल्ट लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस थ्रू अफोर्डेबल एक्सपोर्ट्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन. चाइना से कितनी कंट्रीज ज़्यादा खरीद रही हैं? इंक्रीज इन चाइनाज एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस. तो उसमें देखिए कि वियतनाम ने इतना बढ़ा दिया, हांगकांग ने इतना बढ़ा दिया, EU ने इतना बढ़ा दिया, राइट? इंडिया ने भी थोड़ा बहुत बढ़ाया है, थाईलैंड. तो ऐसे करके इन सब कंट्रीज ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है चाइना से, राइट, इन डिफरेंट नंबर्स. सेक्टोरल ट्रेंड्स. यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, बट दीज वर इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू मैसिव गेन्स इन अदर मार्केट्स. प्लेसेस बाइंग लेस फ्रॉम चाइना, तो ये डिक्लाइन हुआ है. यूएस में तो डिक्लाइन हुआ है, रशिया में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और इन कंट्रीज में, बट ओवरऑल नेट काफ़ी पॉजिटिव है. Why China won the trade war? China deepened its global trade influence, expanded dominance in all of these EVs and batteries, strengthening of geopolitical clout. Right? China की काफी क्लाउट बढ़ गया है. इंक्रीज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ अफ्रीका. सो ये लोग इनफैक्ट हमें पता है कि दुनिया भर में डेट भी बांटते फिरते थे बहुत सारी कंट्रीज में जाके, जिनको जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पे जाके बोलते थे कि हम आपको पैसे देंगे, आप जो भी लेकिन क्रिएट करोगे एसेट, फिर वो हमारा हो जाएगा. अगर आपने पेमेंट नहीं की तो वापस नहीं दिया तो वैसे बहुत सारे इन्होंने कि पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं वो ओन करने शुरू कर दिए. तो चाइना जो है वो चाहे सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से घी निकालने की पूरी कोशिश कर लेता. US strategy failed to achieve its core objectives. Reduce Chinese import, bring manufacturing back, break China's export dominance. None of these were achieved. Instead, supply chains rerouted, China diversified markets, exporters adapted. So, classic case of shooting yourself in the foot. He will never agree. Okay, Trump will never agree, but he may see the light of the day sometime. Challenges China में है अभी भी, weak household consumption है, slowing factory output है, and all of that. डोमेस्टिक इकोनॉमी इनकी फ्रेजाइल, इवन एज एक्सपोर्ट्स बूम, और लो मार्जिन एक्सपोर्ट की रिस्क है. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क्स. ग्लोबल एंटी डंपिंग पुश बैक, ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल डिमांड, ये सब. व्हाट डज दिस मीन? लिमिट्स ऑफ टैरिफ बेस्ड प्रोटेक्शनिज्म. टैरिफ alone cannot weaken a country that controls critical supply chain reroute. इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट हमारे पास भी दूसरे ऑप्शन क्या हैं. जैसे हमारे तो एक्सपोर्ट्स हिट हुए थे, लेकिन हमारे भी बढ़ गए हैं. दूसरी कंट्रीज को हमने भी थोड़ा ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, राइट? ओके, व्हाट चाइना डिड, इंडिया कैन आल्सो डू. डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट, यस इंडिया कैन. तो चाइना ने भी ऑलरेडी इंडिया अफ्रीका फोरम में और लैटिन अमेरिका में, लेकिन लैटिन अमेरिका में भी मैक्सिको में गड़बड़ हो गई अभी, UAE और इधर उधर हर जगह पे. इंडिया कैन डाइवर्सिफाई बट ग्रोथ इज स्लोअर बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्केल इज स्टिल लिमिटेड एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिमेन्स हाई. तो हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी एंड मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्केल बिल्ड करनी है, राइट? लेबर और लैंड रिफॉर्म्स करने हैं और ये सारी चीजें करनी है. दैट्स इट. ओके, ऑल राइट.
Any thoughts on this? Questions, comments, anyone? Okay, all right. So let me ask a question. Yes, Kushal. Sir, I have a generic question. Hmm. Sir, so US also has a lot of debt on it, right? Around $35 trillion. Hmm. So, sir, do you think that the dollar bubble can burst in because US doesn't have any gold reserves, right? So dollar is anyhow a paper only, right? Paper currency. So because their debt is so high and they don't have any gold reserves, so do you think that the dollar's value will go down in the future or something, or it will still remain the main central hub or something like that? De-dollarization, which means you mean to say? Yes, sir. Yes, sir. Just a question, sir. नहीं सी देखो ये बहुत एक मतलब it's a very complex thing. But what you said is correct, that people are talking about de-dollarization, which means can dollar lose its dominant position, right? Now every other country, so whether it is China, they are trying that their currency gets more accepted. So Indian rupee, so we are trying to, let's say when Putin came and whatever we are trying to do with Russia, so we are saying that we will do our deals not in dollar but in rupee ruble, right? So but then see again, this is all very limited. अभी मतलब कहीं पे भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है. दूसरा, जैसे एक ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही थी, तो कैन वी ट्रस्ट चाइना फॉर दैट मैटर? इज चाइना ट्रस्टवर्दी? हम चाइना के साथ हाथ तो मिला लें, बट चाइना का तो कोई ट्रस्टवर्द, चाइना तो कभी भी पलट जाता है, राइट? सो द पॉइंट इज इट इज नॉट दैट इजी कि डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगी. बातें होती रहती हैं और होती चली आई हैं, but it remains to be seen because most of the financial is large financial institutions, banks और जितने भी हैं जिसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड होता है, एक स्विफ्ट जो सिस्टम है वो भी यूएस का ही है. तो ऑब्वियसली पीपल वांट टू कम आउट ऑफ दैट बिकॉज यूएस कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन यू फॉर एनीथिंग इट डजंट लाइक. तो यूएस आपकी पूरी वो डॉलर वाली वो बंद कर सकता है, राइट? जैसे कि उसने रशिया के साथ में किया हुआ है और बाकी कंट्रीज, ईरान के साथ में किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया के साथ किया हुआ है. तो वो अपने वो कर सकता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग अपने दूसरे दूसरे तरीके मैकेनिज्म बना रहे हैं. इट विल टेक टाइम. ओके, श्योरली इट इज गोइंग टू बी हिट, बट देन अभी अभी वो दिन काफी दूर है. दैट्स माय व्यू. ओके, ऑल राइट. तो व्हाट वाज आई वाज आस्किंग, क्वेश्चन मेरे दिमाग में था जो मैं आपसे पूछने वाला था. ठीक है, भूल गया, चलो कोई बात नहीं. ऑलराइट. ओके, एनी अदर पॉइंट और comment anyone has? ठीक है, fine. So I think we will kind of call it a day. I'll keep sharing. देखो, आपसे रोज रोज तो I share the newspaper. I'll send you the link of some Telegram channels which you can join. आई एम श्योर कुछ लोगों में से, आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी हो गए उन चैनल पे जहाँ पे वो सारे न्यूज़पेपर देते हैं, तो यू कैन रीड वट एवर यू वांट. There's a TTBR which I share, which is good compendium of articles. I'll try to list out every day, इसमें से ये articles important है, ये आपको पढ़ने चाहिए. And then apart from that, एक top headlines वाला भी I'll start coming out with that also. This much is good enough. And then these sessions that we will do where we will discuss. So like this, we will be having the ongoing whatever news which are happening, and also we will take up those prominent things which we need to know. Like I said, Israel Palestine हो गया, right? Maybe Israel Hamas वाला हो गया, sorry, Israel Palestine हो गया, then Russia Ukraine हो गया. तो इनके क्या हिस्ट्री है, right? What is the status? How does it affect? And then maybe from our strategic perspective, जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 370, जो दूसरे ये सब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुए हैं इवेंट्स, उनको भी हम रिव्यू करेंगे. That's how we'll go. Yes, Janvi.
Sir, I had a question Hmm. with our latest topic Hmm. regarding India and China. Hmm. So, sir, China में there is a kind of dictatorship, right? And India is a democracy. Hmm. So, does this affect how fast-paced the economic growth or basically the trend of the economic growth? Does the political situation affect that? Yes, it does to a great extent. Now, both have their pros and cons. China has been able to jump to the second position globally in GDP within a very short period of time because it was an authoritarian regime. So China, we can say it's not a democracy; it's an authoritarian regime. There's only one party, and Xi Jinping is the Sarve Sarva of China. Whatever, if anyone goes again, I mean China में तो मीडिया भी आपको पता ही है कि चाइना में नो सोशल मीडिया अमेरिकन नॉर्मल जो है वो नहीं है नो आउटसाइड media is allowed there. They have their own way of conveying whatever information. So China is a authoritarian or you can say dictatorial kind of a regime. But their political system was basically you can say communist or authoritarian, but their economics this thing was capitalism. So they were able to make all these. I mean, they wanted to grow China into a huge manufacturing powerhouse, and for that, whatever was needed to be done, right? So they were able to do, create all those supply chains, create all that infrastructure, because China could act like one unit, whereas India being a democracy and that too being such a diverse country, and different parts of the country have got different flavors of their own. It is not easy to bring everybody on the same page because there are lots of these equations, right? And so here the prime minister does not have the kind of power that the Chinese president or Xi Jinping has, right? So whatever reforms you bring or whatever changes you bring, they will all be tied up in a lot of hassles and they will take their own time because we have a democratic system, right? And then again we have our own typicalities. Apart from democratic system, we have a Indian value system like which is corruption and a lot of those things which are not conducive to the kind of growth that we are looking for. So you can say that uh, that is what is also holding us back. Somebody says we should also be like China, but Chinese that has got its own disadvantages also. Like okay, they may be the economy is grown, the but GDP per capita is 6 times what we have. But in terms of the freedom of speech and in terms of many other things, their citizens are not really in the same boat as what we are. There are many uh, good things about India, right? But obviously, again, there are bad things also. So it's like to each its own. You cannot replicate. China could not have become China if it had been having a system like India. That is for sure. And even if we adopt a system like China, it'll first of all not be possible here. But even if we do, I don't know what will happen. So, but then uh, the governance, the politics, and everything has to clean up here to go to reach where they are. That is for sure. Yes, Ariman. Sir, on the same topic, I would like to add that since India is a welfare state, so we cannot be like China. So, like any decision that our government makes, it takes in the sense that no party is affected, be it small group or a large group. But in the case of China, it is not the case. And like for the example, like these days, the media compares that air pollution was controlled in China very effectively as compared to Delhi NCR, for example. So the same measures that were adopted there are not possible to be adopted because of our political system that we have adopted. Uh, I would disagree a little bit here. To some extent, I agree, but uh, see, here the problems are a little different. Uh, the government, if it really puts its mind to it, it can do anything. Okay, we have shown it by way of our the way we came out with a vaccine in such a short time, our own homegrown vaccines, right? We were far ahead of other countries.
which were maybe even more advanced than us. So if we put our mind to it and we have the political willpower and everything, then things can be done. But see, pollution is not a very good example of this. Uh, so let's say in China they could 30-40 years back they could have a policy of one child, and they implemented it ruthlessly. In India, can it be done? No, because our social fabric is also very different, right? We are a very diverse set of country. I mean, diverse country with diverse cultures, and it is very difficult for one person to bring them all on the page unless the person becomes a dictatorial, and then that thing will not work here in India. So each society is different, right? They had their own uh, flavor, but yes, there are many things which are good about them which we should pick up, which we are not picking up. That is the problem. See, every system is not 100% perfect, but you have to look at whatever they did and whatever could be adopted here. But unfortunately, we don't do that, right? So there, uh, kind of, I differ that there are things which we can also implement, but we have so many other issues that we don't. Okay, so this has become a good group discussion. So I'm happy that we kind of kick-started our group discussion also, because we'll be having very soon our group discussion sessions also. इसमें भी कुछ topics वहीं के वहीं करेंगे, कुछ topic आपको पहले से prepare करने को दे दिए जाएंगे. But I really think we'll have good discussions as we go along. Yes, Hitesh. Sir, I had a small question. Well, I come Yes. from a finance field. I Mhm. had that specialization in my graduation. So I just go through the stock market of India daily Mhm. and the gold rates. And on the weekends, I study a company into which a foreign indirect investment came. Apart from that, would you suggest anything else that we could study on a regular basis? आपको देखो, मैं जो फाइनेंस में जो आपको जितना पढ़ना है ना, तो फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, तो इनके जो स्टडी किट्स, आई शेयर द स्टडी किट्स, आईएम्स के स्टडी किट्स होते हैं, उसमें वो कवर करते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंस. वी विल आल्सो डू इन आवर क्लास. ओके, हम क्लास में भी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स और फाइनेंस के, मार्केटिंग के, सभी के बेसिक्स करेंगे. तो एक तो देखो, मार्केट को फॉलो करना इज अ डिफरेंट इशू, राइट? वो आपको फॉलो करना है, राइट? From the perspective of maybe you are an investor or you are a trader or whatever you are, or you are a prospective investor, so you are looking at the market. They will, I mean, आप डिपेंड करेगा आप किस तरह के रोल के लिए जा रहे हो. अगर आप बोलोगे कि मुझे फाइनेंस में जाना है, तो फिर आपको डीप हार्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लेकिन अगर आपको नहीं जाना है, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू. सो दैट वी विल डिस्कस एज वी गो अलोंग, दैट हाउ मच डेप्थ यू शुड हैव. और अगर आपने किसी फील्ड में काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली देन दे विल आस्क यू मच मच मोर डीपर क्वेश्चंस, राइट? सो अभी for the time being, you can keep track or keep doing whatever you are doing, and then depending on your situation, your calls, we can discuss on a one-to-one basis that how much deeper you should go, right? Okay, sir. Thank you. Right. Yes, Janvi. Sir, I had a question on similar lines. So, sir, I am from an engineering background, working as a software engineer, and so my question is, how much depth should I go on the finance side or business side? No, what the depth that you should go is that you should be aware of these common economic terms, right? Like GDP, inflation, unemployment, repo rate, this rate, that rate. ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. मार्केट्स का आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? कि इक्विटी, लाइक वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंसिंग, राइट? तो उसमें डेट होता है, इक्विटी होती है, तो ये क्या होते हैं. देन स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, देन स्टॉक इंडाइसेस क्या होते हैं. तो आपको कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में वो नहीं पूछेंगे आपसे, किसी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं पूछेंगे आपसे, किसी फाइनेंशियल रेशियो नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप उस फील्ड के नहीं हो, राइट? बट यू शुड बी, सो जितना आपको करना है उतना हम क्लास में करेंगे. तो जितना हम क्लास में करेंगे यहाँ पे, आप उतना अगर कर लोगे, तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू, Okay, राइट? sir. यस, आशीष. Sir, on a final note, would you also suggest few of the unbiased YouTube channel that we could follow for such news, basic ones? Yes, you can follow शेखर गुप्ता. ओके, कट द क्लटर एक उसका है यूट्यूब पे. शेखर गुप्ता, द प्रिंट, राइट? सो ही runs this print, and he comes out with videos. I follow him very very religiously. He is a
absolutely objective, neutral, unbiased, de-hyphenated. He calls himself de-hyphenated, which means he's not associated with any party. And I really enjoy his coverage of any event. So I would highly, highly recommend that you can go to his YouTube, look for Shekhar Gupta, just search for it, and start going through his videos. All right. So, sir, first post is also in नहीं, that way. I don't. I just follow him, the print, and first post is also good, okay, that way. But मैं इतना regularly उसको नहीं ज्यादा देखता हूँ. तो Sir, I think first post थोड़ा India biased है, as far as I understand. हाँ, थोड़ा है. Yes, yes. तो मुझे एक्चुअली शेखर गुप्ता बिल्कुल न्यूट्रल लगता है. He calls a spade, and he's not kind of inclined. ना तो वो बैशिंग अननेसेसरली किसी की करेगा, ना कुछ वो करेगा, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से. I mean, he's a very seasoned guy who's a old timer and veteran actually. तो आप उसको कर सकते हो फॉलो. All right, sir. ओके, चलिए. ऑल राइट, ओके गाइस. सो यस कुशागर. सर एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे सर मैं भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आता हूँ. सो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एज एसडी. तो सर ये पूछना था कि जैसे जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ अभी कंपनी में, तो सर वो लोग उसका तो पूछेंगे ही, तो उसका मुझे कोई ये देखना चाहिए कि मैं उसका कोई एक टेंजिबल आउटपुट दिखा पाऊँ उनको, कि मतलब एटलीस्ट मैंने जो काम करा है उसका इन नंबर फिगर्स, या फिर जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसी बिजनेस यूजर के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट टीम के लिए, तो उसको क्या एक टेंजिबल फायदा मिला उसका, तो वो एक हाँ हाँ, लिख के बिल्कुल. रखना चाहिए ना, मतलब कि हाँ हाँ, कैसे बिल्कुल क्या रखना उसका चाहिए, आउटकम बिल्कुल. निकला है. यस यस यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और सर अगर वो नंबर्स के टर्म्स में हो तो वो बेटर रहेगा ना, कि यस मतलब यस कैसे उसका यस. कुछ. हाँ हाँ, मतलब आप उसको अल्टीमेटली लिंक कर सकते हो ना, कि वट एवर आई वॉज डूइंग देयर अल्टीमेटली इट लेड टू प्रॉफिट जनरेशन ऑफ एक्स वाई जेड, और कॉस्ट सेविंग ऑफ एक्स वाई जेड, और रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ एक्स वाई जेड, और टर्न अराउंड टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ दिस वट एवर इट इज. तो आप उसको अल्टीमेटली लिंक कर सकते हो उससे. यस सर. एंड सर एक चीज़ और पूछनी थी इसी चीज़ पे. सर जैसे हमने देखा कि कैट में भी लाइक हर एक स्लॉट में एआई के ऊपर एक पैसेज था. तो सर टेक इंडस्ट्री से होने के उससे हम लोग, मतलब अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में एआई पे काम नहीं भी करा है, बट अगर हमें उस चीज़ की नॉलेज बहुत इन डेप्थ है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि हमने एक प्रोजेक्ट करा था जिसमें हमने कोई भी लाइक एक टाइप ऑफ एआई इन्वोक करी और उसको यूज़ करा करके? हाँ हाँ, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल. अभी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एआई के ऊपर भी देखो अलग अलग टाइप के वो लेके आएगा, कि ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जॉब चले जाएंगे, आपका क्या व्यू है, और ये है. तो इस तरह से भी डिस्कशंस होंगे. उसके ऊपर भी हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलो. ऑल राइट, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, एंड वी विल सी यू अराउंड. बाय बाय. Thank Thank you, you, sir. sir.